Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to maths class. Dear students, I hope you enjoyed your Diwali holidays. After S7, now we are going to start syllabus of SA2. Today we will learn about unit number 6, long division. In this lesson, we will learn about method and terms used. Now start, open page number 85. Please take your pencil and write CW and date and day also. Then today's date 24 November 2020 and day Tuesday. Now let's start recall. Long division is another way of showing division. It is very useful while dividing large numbers. लॉन्ग डिवीज़न दिखाने का एक और तरीका है, लार्ज नंबर्स को डिवाइड करते समय यह बहुत ही यूज़फुल है. मेथड एंड टर्म्स यूज. एग्जाम्पल नंबर 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 3. Or in this example, we will learn about which number is called divisor, which number is called quotient, and which number is called dividend. So now 2 is divisor, 6 is dividend, and 3 is quotient. Okay, now here are some definitions of dividend, divisor and quotient. Okay, what is dividend, what is divisor and what is quotient? Okay, the number being divided is called a dividend. The number being divided is called a dividend. डिवाइड होने वाले नंबर को डिविडेंड कहा जाता है. द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवाइजर. द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिवाइजर. जो नंबर डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं. ओके, उसे डिवाइजर कहा जाता है. लाइक दिस 2 इज डिवाइजर, 6 इज डिविडेंड. ओके, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट. डिवीजन के रिजल्ट को, इट मीन्स आंसर को, कॉन्स्टेंट कहा जाता है. ओके, सो 3 इज कॉन्स्टेंट. इन दिस एग्जाम्पल डिविडेंड इज 6, डिवाइजर इज 2 and constant is 3. Okay dear. Now example 2. Take the given division fact written in long division correctly. Also name the dividend, divisor and constant. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको. वो एग्जाम्पल आपको कैसे राइट करना है, वो कौन सा करेक्ट है उसको आपको टिक करना है. ओके, there are two methods. Okay, 28 divided by 7 is equal to 4. Which one is correct? This one is correct or this one is correct? Okay dear. 28 divided by 7 is equal to 4. 28, it is dividend, 7 is divisor and 4 is constant. Okay, so now this method is wrong and this method is correct. Okay, this one is correct because 28 is dividend, 7 is divider and constant is 4. Okay dear, so now here tick. Right here dividend 28, divisor 7 and constant 4. Okay, understood everyone? Next, reminder. What is reminder? Sometimes a divisor may not completely divide the dividend. कभी कभी डिवाइजर पूरी तरह से डिविडेंड
को डिवाइड नहीं कर सकता है. ओके, एंड अनडिवाइडेड वैल्यू को वो नंबर से जो नंबर बचते हैं, ओके, उसे रिमाइंडर कहा जाता है. द अनडिवाइडेड वैल्यू लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड अ रिमाइंडर. नाउ एग्जाम्पल हियर 15 divided by 2. Okay, 15 divided by 2. Right here 15 is dividend, 2 is divisor. Now 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 six are 12, 2 sevens are 14. Okay, 7 twos are 14 is closest to 15. Okay, 14 ये 15 की closest है. So write here 14. Then 15 minus 14 is equal to 1. 1 is remainder. Okay, क्योंकि 1 ये number बचा है. Okay, left over is called a remainder. So write here dividend 15, divisor 2, constant 7 and remainder 1. Okay dear, dividend 15, divisor 2, constant 7 and remainder 1. Now turn your page. Try this. Put 9 erasers in groups of 4. Here 9 erasers. ओके, उसे हमें 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. सो राइट हियर डिवीजन फैक्ट 9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ओके, लॉन्ग डिवीजन. ओके, 9 इज डिविडेंड, 4 इज डिवाइजर. सो राइट हियर 9 dividend and 4 divisor. Okay dear, okay, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 8 is closest to 9. So write here 8 minus and here 2. 2 is a constant. Okay, and 9 minus 8 1. 1 is remainder. Okay, so write here dividend 9 erasers, divisor 4, constant 2, there are 2 groups. Okay, and then remainder 1. लेफ्ट ओवर अनग्रुप नंबर, मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप आपके रेडी हैं और 2 ग्रुप में मतलब 2 जो ग्रुप्स आपके रेडी हैं उसमें एक 1 इरेजर है जो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है. ओके, लेफ्ट ओवर अनग्रुप नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. पुनीत कलेक्टेड 23 पेबल्स फ्रॉम द रिवर साइड. ही वॉन्ट्स टू गिव equal number of pebbles to his sister, mother, father and himself. Okay, 23 पेबल्स हैं जो पुनीत ने कलेक्ट किए हैं रिवर साइड से. ओके, अब उसको इक्वल नंबर पे मतलब वो पेबल्स को इक्वल नंबर में उनको डिवाइड करना है. सिस्टर, मदर, फादर एंड हिमसेल्फ इट मीन्स पुनीत. ओके, there are 4 person. Okay, there are 4 person. Write the division fact. So write here 23 divided by 4 is equal to. Okay dear, write the fact as long division. Write the fact as long division. So 4 is divisor, 23 is dividend. Okay, now here like this. Okay, how many 4s are there in 23? How many 4s are there in 23? So
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 and 4 5 जा 20, and 20 is closest to 23. Okay, so write here 5. 4 5 जा 20 and minus and remainder 2 minus 2 0, 3 minus 0 3. Okay dear, how many 4s are there in 23? 5. Dividend 23, divisor 4, quotient 5 and remainder 3. Is the remainder smaller or greater than the quotient? quotient से रिमाइंडर स्मॉलर है कि ग्रेटर है? यस डियर, यस, ऑब्वियसली स्मॉलर. 5 is greater, okay, then 3 is smaller number. Okay, understood everyone? Understood everyone? Bye. Take care. Stay home. Stay safe.